So guys, my name is Abhay Rathore and I am taking the class of English spoken, and today I am going to teach how to start your English spoken, right? And level 1 I have written. तो मैंने यहाँ level 1 लिखा है. So for starting, you have to keep some questions in your mind. You have not to keep the answers. आपको कोई टॉपिक रखने की जरूरत नहीं है. आपके मन में 5-10 क्वेश्चन हमेशा रहना चाहिए कि हम किसी से बातें कर सके. In that concern, I have started the questions with what, when, where, who and which. These all words are there. और इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना वो लेवल 1 होता है. उसमें क्या होता है ना कि उसका आंसर आपको एक लाइन में या एक वर्ड में मिल जाता है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है what. So from what I have created a lot of the questions like what's your name, what's your mother's name, what's your father's name, what's your ambition, what's your hobby, what's your faculty and many more. इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. Like what's your name? My name is Abhay Rathore. What's your father's name? बहुत इजी है ये, इसको भी बता देंगे. What's your mother's name? What's your ambition? My ambition is to be a good person. My ambition is to be a doctor. My ambition is to be an engineer. So whatever the ambition you have, just you will tell. Then what's your hobby? आपका hobby क्या है? Then what's your faculty? Faculty means in Hindi संकाय. Like arts, science or commerce. You are a student of arts and you will tell my faculty is arts. If your means faculty is commerce, then you will tell commerce. और faculty का एक और मीनिंग होता है कि आपका आपके टीचर का क्या नाम है. Like means who is your faculty. जब आप टीचर पे जाएंगे तो टीचर is like a person, so you have to start not from what. आपको स्टार्ट करना पड़ेगा who is your faculty. तो ये what हो गया. फिर when. When का मतलब होता है कि टाइम, उसका आंसर टाइम होगा. जब भी कोई क्वेश्चन when से शुरू होता है उसका आंसर टाइम होगा या माइंड में सेट कर लेना है. when means कब. so when आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि when do you wake up in the morning. मैंने do को ब्रैकेट में डाल दिया है कि अगर आप नहीं भी इसको स्किप भी कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा. राइट. so when you wake up in the morning, when you go to English class, when you go to college, when you go to office, market, house, lot of the questions are there. आपको कम से कम 5 क्वेश्चन इस तरह का हमेशा माइंड में रखना है. क्वेश्चन रहेगा, कोई भी आपसे बात करेगा तुरंत आप काउंटर क्वेश्चन कर दोगे, हेजिटेशन नहीं रहेगा. ठीक है. अगर आपसे ही क्वेश्चन करता गया अगला तब तो आप वहां पे ना हेजिटेशन से भरे हुए रहोगे. आपके अंदर ये होना चाहिए. उसके बाद वेयर. वेयर मींस होता है कहां. तो वेयर से जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा, कोई प्लेस होगा. लाइक वेयर डू यू लिव. आई लिव एट पटना. आई लिव एट दरभंगा, जो भी है. आई लिव एट विलेज. वेयर डू यू प्ले. आप कहां खेलते हो. आई प्ले इन फील्ड, है ना. Then like where do you study? I study in Rathore's classes. I study in science classes. जो भी आपको बोलना है ये बोल देना है. तब जो तीसरा मैंने टाइप यहाँ पे दिया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, चौथा कि who is your ideal person? My father is my ideal person. My mother is my ideal person. Mahatma Gandhi is my ideal person. Okay, like Draupadi Murmu is my ideal person because she is the president of India. Who is your best friend? तो बेस्ट तो आप लोग अगल बगल ही रहते हो, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है वो बोल देना है. तो who is your favorite teacher? आपका फेवरेट टीचर कौन है? Who is your favorite sports person? Right? Then who is your favorite actor? So in this way you have to create a lot of the questions, and I think I have written that you have to prepare 10 to 20 questions. तो ये आपको कर लेना है और इसका प्रैक्टिस करना है. In starting you have to practice in yourself. Ask the question and tell the answer. Then you have to practice. So next class I will also give you time. मैं आप लोग प्रैक्टिस करवाऊंगा क्लास में. आप लोग आपस में प्रैक्टिस करेंगे. Okay. And I just want to convince you, my dear, that while you start speaking English, then for that you should have confidence, and confidence comes from content. Content means knowledge. You must have knowledge. Without knowledge, confidence is called overconfidence. Okay? So overconfidence is what? When you don't have knowledge, you feel that no, I can do better. No, means I can drive the bike without petrol. It is called overconfidence. So nowadays students are also like I can crack IIT, I can crack NEET without knowledge. It is called overconfidence. So be paltry, be moderate, be grounded, and you have to see yourself that what is my reality, what is my negative points, which subject I am not getting comfortable. Then you have to work for that subject. Automatically you will be the best person. Best does not come from heaven or from somewhere else. You are the best. You are just the raw material of best. You have to make yourself from raw material to original form. That is called perfection. So perfection comes from practice. If you have knowledge, first thing that you have to study. आपको करना क्या है? As far as the matter of English spoken is concerned,
that there are a lot of process. Like I have told you very easy process, that was LSW. L means listening. So today you are listening me, then you have to just speak. Next time you have to start speak, you have to speak some sentences, and if you don't get any person, you can also practice in the class, but at your home you have to practice into mirror. Take a mirror, ask the question and give the answer. How I used to practicalize it, like my name is Abhay Rathore, so I was making two person in myself. One is Abhay, second is Rathore. Like I was taking a mirror. Hi Abhay, how are you? Well Rathore, I'm fine. What's your name? My name is Abhay Rathore. What's your father's name? What's your ambition? What's your hobby? First of all, you have to keep your mouth open, my dear. Just take your example that when you are talking in Hindi with your friends, you would be leader and advocate there. जब आप हिंदी में अपने दोस्तों से बात करते होंगे तो वहां आप लोग वकालत करते होंगे, हमसे अच्छा कोई बोलेगा नहीं, हम बोलेंगे तुम चुप रहो, like that. In the same way, when you start talking in English, you have to be an advocate. You have to just emphasize there the idea what you have. तो पहले लेवल में ये हो जाएगा, और लेवल 2 जो सेकंड लेवल अब आएगा उस पर मैं आपका कल ले लूंगा, आज मैं थोड़ा सा उस पे उसका ट्रेलर देता हूं. दिस इज द ट्रेलर ऑफ लेवल 2. इन लेवल 2 सम क्वेश्चंस आर हियर, इन दैट क्रॉस क्वेश्चंस कैन बी मेड. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्रॉस क्वेश्चन हो जाता है. जैसे अब कोई आपसे पूछ देगा व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अभय राठौर, तो कोई बहुत कम पूछेगा व्हाई. मैं कहूंगा एक्चुअली माय फादर एंड मदर called me like Abhay Rathore, so I'm Abhay Rathore. But if you tell that my ambition is to be a teacher, my ambition is to be an engineer, my ambition is to be a doctor, then the question is very common. Why you want to be an engineer? Why you want to be a doctor? This comes in level 2. And in level 2, the questions will be started from why and how. Got my point? There are lots of WH words, my dear friends. In that what, when, where, who, which. Like whom. One is whom also. मैं यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ लिख देता हूँ WHOM, whom. Like whom do you like? Whom do you like more? Okay. Like whose, WHOSE. Whose pen is this? ये पेन किसका है? Whose pen is this? तो ये भी दो जो वर्ड है WH वाला, ये भी लेवल 1 में ही आ जाएंगे. जिस वर्ड से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है, उसका आंसर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन में या एक वर्ड में ही आ जाता है, तो उसी को हम लोग लेवल 1 बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू माय ओन कैपेसिटी एंड माय एक्सपीरियंस. तो मैं जहां तक इंग्लिश को जानता हूं, तो उसमें आपको लेवल 1 में अगर इन सब वर्डों पे मींस 5 क्वेश्चन ईच, नॉट फ्रॉम व्हाट बट ऑल द WH वर्ड, इन सभी शब्दों से अगर आपको 5 क्वेश्चन माइंड में हमेशा रहेगा, तो फिर आप नॉर्मली अपनी से ही बात कर सकते हो. कहीं पे जाते हो तो पहले कोई क्या पूछता है जो आपको नहीं जानता, व्हाट्स योर नेम ना, वेयर इज योर विलेज, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हिच क्लास डू यू स्टडी, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन ना. मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया था व्हाट से, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ मिस किया था, दैट इज क्वालिफिकेशन. राइट. सो क्वालिफिकेशन मींस आप कितने पढ़े लिखे हैं. सपोज यू आर इन क्लास 12, यू आर इन BA पार्ट 2 व्हाटएवर. सो अगर आपकी कोई पढ़ाई अभी चल रही है ना, उसको हम परसुइंग बोलते हैं, PURSUING, है ना. उसको मैं आप लोग बोलोगे आम परसुइंग, आम परसुइंग क्लास 12th, TWELFDH. यस, तो मैं बार बार ये लिखता हूँ कि आप लोग को भी रिकॉल होता है 12th की स्पेलिंग. आम परसुइंग क्लास 12th. तब अगर उसी में आप जोड़ देते हो कि विद PCME, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश, then people will not ask you your faculty and your combination. अगर आप केवल ये बोल दिया, आपने बोल दिया कि I am pursuing class 12th, then you are giving chance to the person to ask me more questions, because it is not sufficient now. Like I am studying, I am pursuing class 12th. So question is, then your question is what is your faculty? My faculty is science. Again question is science, then bio or math. Got my point? So actually it is a smartness how to reply. If you are replying in proper way, then questions will not be there. What in interview is taught. इंटरव्यू में क्या सिखाया जाता है कि आपको जब किसी बड़े लेवल का इंटरव्यू देना हो, आंसर ऐसा दो कि क्वेश्चन वहां कम बने, या अपने आंसर को उस टॉपिक पे ले जाओ जिसमें तुम्हारी पकड़ हो. If you don't have knowledge for a particular topic, but if you are telling the word, you are using the sentence in interview, just interview. Actually interviewers are smart enough to grab you,
to clutch you. Actually, they are sitting there to reject you, not to select you. It is not metric or 11th or 12th exam. It is the exam of competition. If you are going in the exam for IS, IPS, BPSC or doctor anywhere else, actually they are sitting there to reject you, not to select you. It means what? Actually, the person who pass mains exam and they are just taking part in interview, then the interviewers are sitting there that no, I have to take only 100 students, but the students are here 1000, so 900 will not get job. So they are supposed to reject the people, not to select the people. So actually they will check your quality, that how you reply the questions, answers are in proper way, that again questions are not forming. If questions are forming, then you have to maintain such a quality that you can fight against the questions, then you are okay, otherwise you will be rejected. कॉमन सेंस है, किसी से बात भी करो नॉर्मली भी ना, तो आंसर ऐसे मत दो कि खुद फंस जाओ, राइट? सो अब एक ही मैंने यहाँ पर लाइन लिख दिया ना कि आई एम परसुइंग क्लास 12th, इसमें दो क्वेश्चन फिर निकल गया, व्हाट इज योर फैकल्टी एंड व्हाट इज योर कॉम्बिनेशन. एक वर्ड यहाँ पे आ गया कॉम्बिनेशन, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ COMBINATI. Combination means the combination of subjects. If somebody asks you, hey, you are student of 12th, yes, I am student of 12th. Okay, what's your combination? My combination is physics, chemistry, math, and English. Okay, thank you. Then actually physics, chemistry, math, and English. If your maths is not there, physics, chemistry, biology, right? So these are the combination. So I just try to inspire you all the people that you have to connect yourself. So level 2, I will teach you tomorrow that what is your ambition. My ambition is to be a doctor. Then I will teach you why. It is a very common question. Any person will not leave you. Actually, they definitely will ask you. Your ambition is engineer. Why? Because I feel that I am fit for this job. I feel that I can get this job, and top of all, I feel that I can do better service in this job. So my ambition is to be an engineer. Don't tell that its salary is more. Prestige is more. No. Prestige is not a post. Prestige is of your duty. पोस्ट को प्रतिष्ठा नहीं मिलता है, काम को प्रतिष्ठा मिलता है. तो आपको ये नहीं कहना इसमें बहुत ज्यादा सैलरी है, इसमें ये है वो है, देन ये आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं है. बिकॉज यू आर सपोज टू बी ए मैन ऑफ ग्रीड. ओ पैसा के लालच में जॉब कर रहा है, फिर पैसा कहीं कम देगा तो छोड़ दोगे. सो देयर शुड बी द वर्क दैट यू लाइक मोर. तो वो आप बोल देंगे. सेकंड इज हाउ. You will tell, yes, I am fine. How are you? I am fine. मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, एक साथ आंसर देंगे. How are you? I am fine. Again the question. How can you say you are fine? How can you say you are fine? So guys, I think these are the trailer of level 2. Tomorrow the batch is going to be very dashing, smashing. So you all will be continuing and you all will try to learn. So guys, again I'm just requesting to all of you, be regular, be sincere, and also students and the viewers who are watching me online on my YouTube channel Abhay Rathod, they all will be connected and tuned with me, and they will get a lot of the new videos also. Thank you very much and wish you all the best.